someone told me कि एक ऑडिशन हो रहा है, आप हिप्पोग्राम का एक सीरियल बन रहा है, and there's a new director. I knew the director was known to my family, so my aunt actually pushed me, said जाओ, अच्छे ठीक ठाक लगते हो तुम, जाओ. So I went and I auditioned and I got it, and that's how it started for me to be on front of the TV. Coming back to your question, which is hosting shows, I won't say VJ is the right term. You know, VJ is video jockey or visual jockey. Right. Okay, so video jockey is someone who really plays videos, like an RJ. You know, so the RJ researches, gets the music, and that's what a VJ does. Of course, we've given every anchor the title of a VJ. There's another VJ which is called the visual jockey, which is a super profession also in our country. When you go to nightclubs and you see all the beautiful displays at the back, now even reality shows are doing these beautiful graphics at the back of the stages. Stage shows पे live आप देखते हैं, बहुत interesting कंप्यूटर के ग्राफिक्स पीछे जो चलते, that's also coordinated according to what कि क्या चल रहा है क्या. That's a visual jockey. That is also a VJ, but that's a different sort of VJ, and that's a new profession in our country, you know, and it's a profession that people are appreciating, you know. Oh, that's very interesting. Yeah, especially in the birth of it into the reality television, especially the stage shows, because I was a part of Saregama. I saw at the back there was a special VJ employed for the graphics of that show. Okay. So it's a न्यू प्रोफेशन, यू नो, वी डिडंट हियर दिस बिफोर. हमारे देश में बहुत सारे क्लब्स है, बहुत सारे नाइट क्लब्स है जहाँ पे वो लोग लगाते हैं प्रोजेक्शंस पीछे, तो दैट्स अ वीजे. सो आई स्टेप्ड इनटू, आई वुड से, एन एंकर्स पोजीशन, क्योंकि उस समय पे, एंड स्टिल थ्रू माय 8 years, आई वाज अ चैनल फॉर 8 years, वेयर सिर्फ क्योंकि ये करियर प्लान नहीं था मेरे दिमाग के पीछे, वो भी चल रहा था कि ठीक है 3 साल का ग्रेजुएशन करके मैं निकल जाऊंगा कहीं अमेरिका, निकल जाऊंगा. मेरे सारे दोस्त वहाँ पे बुला रहे थे, आजा, तो मैं बोला आऊंगा, डोंट वरी, एक दिन आऊंगा. तो कभी मैंने सोचा नहीं कि ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा. मैं कर रहा था क्योंकि पैसे मिल रहे थे अच्छे और मजा बहुत था उसमें, यू नो, बिकॉज़ होस्टिंग हैज टू होस्ट ऑन द ट्रैवल शोज फॉर चैनल. तो मतलब मेरी जो, मैं कहता हूँ, लोग बोलते तुम ग्रेजुएट हो, मतलब हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं ट्रैवल में ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि मैंने इस पूरा देश को देखा है, घुमा है, गाड़ी चला के 26,000 किलोमीटर मैंने चलाया इस देश में. ओवर 4.5 months I've been to every state in this country, seen mostly everything. I mean, one cannot see the entire country in their lifetime, but mostly I've seen a lot. I've seen a lot more than any average rich person my age has. So that I thank Channel V for, because I was their travel host. Okay. So that's what I would like. That's more what I was then. So basically, you were a music anchor. I would say no. I was a host. You were a host. That's what I was. I was hosting shows. Okay. Because you see, when you say, if you look at, हमारे टाइम पे एक ट्रांजिशन हुआ था. हमारे पहले बहुत इंटरनेशनल टाइप वीजेस हुआ करते थे टेलीविजन. They truly fitted the definition of VJ. क्योंकि like a Sophia Huck, if you take her into now, of course, now people just talk about it and can say कि oh, they got paid so much money. Yes, they got paid a lot of money, but they got paid money because they did a lot more. वो लोग खुद के स्क्रिप्ट्स लिखते थे. म्यूजिक का जो प्लेलिस्ट था वो अपने प्रोग्रामिंग हेड से, they should run it to the programming head and decide करते थे कि ये गाने होंगे. उनके चॉइस के थे, मतलब they had a say in that, which also we tried at our time, but not as much as it used to happen then. खुद के मेकअप वो करते थे, अपना पूरा जो ब्रांड था, they used to design it and do it themselves. I think even to the point जहाँ पे VJs अपने खुद के shows भी produce करते थे. If you look at, I think I've not seen that time, because मैं उस transition के बाद आ गया था, where VJs, at least music-based VJs, वो नहीं reading or information that was fed to them. So if अगर जो students anchors बनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई, बहुत सारे students हैं who really want to come in front of the camera. What are the three basic qualities आपके हिसाब से जो इसके लिए जरूरी है? I think पहले तो आपको एक बात करने की जो आदत है, या तो जो ज्यादा बात करते, you should enjoy talking. Right. क्योंकि आपको कभी-कभी मुझे लगा है कि मैं I may be not fit to be an anchor. I've actually thought that through my many years of hosting many shows, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता हूँ कभी-कभी, पर मेरे moods भी होते. I think end of the day 3 क्वालिटी अगर आप पूछ रही हैं मुझे, तो एक तो डेफिनेटली जिस चीज पे आप होस्ट कर रहे हो उसकी जानकारी होनी चाहिए. दूसरी, आप में कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो कैरेक्टर होना चाहिए. एक्स फैक्टर और वाई फैक्टर और जेड फैक्टर, कैन बी एनीथिंग. एक्स फैक्टर को नॉर्मली थोड़ा सा एक्स अपील शायद उस टाइप गुड लुक्स के साथ एसोसिएट करते हैं. आई थिंक इट कैन बी एनीथिंग, something that makes you stand out, something that is different from everybody else, something that gets people's attention.
Right. It can be, you can be a beautiful person, you can be physically, I'm talking about beautiful person, or you can be a beautiful person inside. That comes out beautifully, and that comes out in things like eyes and smile, and you see an average looking person light up the screen many times. Yes. So I think that is the second thing. And third thing, you have to be very comfortable with the camera. क्योंकि ये जब मैंने चालू किया था, when I started off as an actor, तो मैं भी पूरे में था. हर जब भी आप कैमरा के सामने डायलॉग बोल रहे हो, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या इनसे बात कर रहा हूँ या किसी और को देख के बात कर रहा हूँ. When you come into a screen, into a studio where you're the anchor of the show, आपको कैमरा में देख के बात करना है. And that was the most difficult barrier I had to break. So do you think student today, like there are lots of courses available, technically ये training ले लेनी चाहिए उससे पहले? ट्रेनिंग की क्या बात है, आपको बस कैमरा खड़ा करना है और बात करना है. और you can do some dry runs, you think? Yeah, absolutely. I think that's the only way to do it. So I don't know. मुझे तो वही ट्रेनिंग मिला था. Okay. Because when I started working, that was the first thing my executive producer called me and said, he said, you're very good. Only thing is you have to realize your relationship with this camera. Through this lens, lots of people are seeing you. So you somehow have to know how to have a full conversation with the lens without the lens responding to you, and keep that conversation interesting. Try and keep it interesting. So but interesting की बात दूर है, क्योंकि आपको information भी मिलता है. Right. या आप लिख के आते हैं, तो आप पढ़ के आते हैं, तो you rehearsed all that before. पर किस तरह से आप इस कैमरा से बात करके, मतलब बिना कोई रिस्पॉन्स मिलके, तो आपका दिमाग कुछ टाइम में चलना लगेगा कि आप समझेंगे कि आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है और आप कॉन्वर्सेशन को आगे खुद ही ले रहे हैं. सो दैट कम्स आई थिंक विद टाइम. तो अच्छा है कि अगर आपको मौका मिले, आपके पास आपके दोस्तों के लिए सामने आप बात कर सकते हैं. आई थिंक इफ यू आर ऑलरेडी अ डिबेटर, इफ समवन हूज ऑलरेडी अप ऑन स्टेज, इफ यू नोटिस देयर वेरी few like at least in my time, मेरे टाइम पे सारे जो VJs आए थे, सारे जो होस्ट थे, they were all either public speakers already, मतलब आप shows कर रहे थे, live events कर रहे थे, corporate events कर रहे थे, या they were from radio background. I was the only person who had no background. So until date, I fear live shows. I get very frightened of live shows. मैं करता ही नहीं हूँ, मतलब गिन चुन के मैं 5 को 1-2 कर लेता हूँ, literally, because if someone says me, I really want you to be a part of this show, I do it. So I'm not a very confident person on a live show. I'm happier in a closed space where one person is talking to me. तो मैं ज़्यादा बोलता हूँ. Okay, yeah, we believe that. We know कि आजकल एंकरिंग का जो ये प्रोफेशन है, it is, and VJing also, it's a very competitive profession. Everybody wants to be there and has to be really good. There's a lot more. अगर एक जमाने में सिर्फ X Factor चाहिए, आजकल तो A से लेके X की जरूरत पड़ती है. तो ऐसे कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में आप चूंकि इस प्रोफेशन में रह चुके हैं, what is the one thing which you'll tell the students, this will keep you ticking? I think at the end of the day, any profession in entertainment, शायद आप एक्टर हो या डायरेक्टर हो या तो एंकर हो, any entertaining medium, I think आपको ऑडियंस के साथ टच में रहना चाहिए. You should know what the audience is liking, what they're not liking. At the same time, it's a very fine balance, I find it. I may be completely wrong. आप ये delete कर सकते हैं, और you can do, exit the screen if you're watching this on your computer, if you don't believe in me. पर मुझे लगता है कि बहुत ही फाइन लाइन है कि एक आप जो बनाना चाहते हैं या जो कहना चाहते हैं या जिस तरह, without losing yourself, without losing yourself कि this is my voice, this is my inner voice, ये मैं कहना चाहता हूँ, या ये मैं करना चाहता हूँ, या ये मैं बनाना चाहता हूँ, या ये मैं सुनना चाहता हूँ, if you stay true to that and produce something. उस चक्कर में बहुत बार ऐसे भी होता है कि आप ऑडियंस को फिर ये नहीं दे रहे कि तो आप वो देखना चाहते हैं. That's why it's so important to be in touch. So you have to be influenced by the audience and then produce something that's true from your heart. Okay. Now, I think it's something that can be applied into every aspect of the entertainment business. True. कि आप ऑडियंस में टच know who you're trying to sell it to, but don't give them what they want. Give them something that you want to give them, but knowing who they are. Yeah. Know who they are first. So we get it, knowing the pulse. Yeah. So coming back to your question कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, एक तो I think
आजकल के ज़माने आप खुद कह रही हैं और मैं खुद देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग को एंकर्स बनना है, होस्ट बनना है. आई थिंक इफ यू वांट टू रियली अट्रैक्ट समवन, कि अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी है या तो कांटेक्ट है आपके, कि आप एक म्यूजिक चैनल में, या तो आजकल जीसी चैनल्स भी बिंदास अगर आप देखेंगे तो आई थिंक देयर प्रोग्रामिंग इज ग्रेट, इट्स वेरी वेरी पॉपुलर. इमोशनल अत्याचार, अगर आप आपके कोई कॉन्टैक्ट से आप वहां तक पहुंच सकते हैं तो आप अकेले मत जाइए. मतलब मैं पूरब कोहली एंकर बनना चाहता हूँ, आप एक आइडिया लेके जाएंगे उनके पास कि बताओ कि आप क्या कर सकते हैं. उस आइडिया को लिखिए, आप उसको रिहर्स करें, मोबाइल फोन पे शूट करें, दिखाइए उसको. दैट बिकम्स अ वेरी प्रोएक्टिव थिंग ऑफ कि ये आदमी क्या कर सकता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है. क्योंकि जब आप एंकर है, आप एटलीस्ट मेरे साथ हुआ है, आई हैव नेवर सीन टीवी होस्ट हु सेट पे आके जो लाइनें हैं उसको पढ़ के वो करके ऐसे कि अच्छा ओके थैंक यू वेरी मच, और निकले. दे हैव नॉट गॉन वेरी फार, दे गो ओनली टिल दैट पॉइंट. जब कट होता है तो उन लोग की इज्जत भी नहीं होती है, वो लोग निकल जाते हैं सेट पे. द गाइज हु सर्वाइव लॉन्गर, हु आर स्मार्टर एंड डू बेटर स्टफ, द गाइज हु गेट इन्वॉल्वड इन द शो. क्योंकि शक्ल आपकी है. मेरे Right at the end of it, we're speaking to Purab Kohli, who's talked to us a lot about anchoring as a profession, and today he's a successful actor also. And Purab, if I'm asking you in one word, if I ask you, students अगर ये जानना चाहें कि DJing as a career, good, bad, ugly, what's the word? I think it's a lot of fun. मैंने बहुत मजा लिया है. I think it's an opportunity to meet lots of interesting people. And earn money? And on money, for me it's never been about the money. It's I mean I was always very happy with the money I earned. But I'm sure the parents are listening who... Yeah, no. For parents, definitely, yeah. There's a lot of money in television, entertainment. Television has more money than films nowadays, if you ask me. So television definitely has a lot of money. People are making a lot of money. But I don't think उस चीज़ को लेके आपको इसे इस तरफ देखना है. बिजनेस में तो पैसा है ही, आप आ जाएंगे तो मिल जाएंगे पैसे. आपको बॉम्बे आना पड़ेगा तो पैसे खर्च भी होंगे डेफिनेटली. दिस इज एन एक्सपेंसिव सिटी, इट्स नॉट अ चीप सिटी. यू आर फ्रॉम दिल्ली? आई एम फ्रॉम बॉम्बे. आई एम लकी. मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं मुझे जो बाहर से कि यार तुझे रेंट नहीं भरना पड़ता है ना. फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट. आई एम लकी. मैं बॉम्बे से हूँ, मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ. सो इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन टू एंटर. It's definitely a fantastic profession to enter. It's definitely a glamorous profession to enter, and I think some of the best experiences and time of my life has happened when I was hosting shows. Superb. It's been a lovely experience talking to you, to Purab, and let's hope iske baad lots of students and parents take the plunge to enter this as a career. Hope so. Don't blame me if it goes wrong. Thank you. Thank you.